Hello student, I am Dr. Swati Chakravarti. Today we are going to discuss about a very important topic of human rights, and that is the redressal mechanism against human rights violations. भारतवर्ष हो या पृथ्वी भर में मानवाधिकार के ऊपर कोई भी लांछना या फिर वायलेशंस की या फिर कोई भी डेप्रिवेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की अगर हम चर्चा करते हैं तो उसके ऊपर उनके रिड्रेसल यानी कि उनसे मुक्ति की अपेक्षा की कौन से मैकेनिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस हो या फिर इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में मौजूदा हालात पर उपयुक्त रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो सकते हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे. So today we are going to discuss about the redressal mechanism against human rights violations. मानवाधिकार को हरण एवं मानवाधिकार की इस श्रृंखला में मानवाधिकार को सभी के पास पहुंचाने की जो अपेक्षा हम रखते हैं, वो चाहे हमारे नेशनल या इंटरनेशनल सिनेरियो पर कहीं पर भी हो, उसको पूरी तरह से प्राप्त करने की चेष्टा पर उपयुक्त रूप में हमारे पास पहुंचाने की अधिकार भी उपयुक्त रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होना चाहिए. और इसी को कहते हैं द रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि अगर किसी के ऊपर भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की घटना घटती है तो किस प्रकार से, किस रूप से वो घटना की ऊपर हम चर्चा करते हुए उस विषय को उपयुक्त रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए ही रिड्रेसल मैकेनिज्म किस प्रकार से काम आ सकते हैं, that we are going to discuss in our today's lecture. Today is very special day, that is 8th March. We called it International Women's Day. पर अभी भी पाश्चात्य एवं प्राच्य की अगर हम तुलनात्मक आलोचना करें, यानी कि the consequences of the Western culture is very much influenced the Indian society, that the Indian people is actually celebrating the international days with a wholeheartedly, but they actually misinterpret it and do not follow their heart. So it is a time when we are talking about the International Women's Day. It means we are safeguarding our own women. That is our daughter. She could be our mother. She could be our daughter-in-law. She could be our next door neighborhood daughter. But whoever else, it is our primary duty to give them full protection and respect first of all. क्योंकि respect ही एक एवं एकमात्र उपाय है मानव अधिकार की स्थिति को बरकरार रखने के लिए समाज की स्थिति को संतुलनता के साथ, यानी कि with the equilibrium of the societal parameters, societal status, the equality within the two main will of the society, that is men and women, we need to give them full protection and full equality. Without equality, we cannot expect that the human rights can be achieved fully with full potentials. सहकारी रूप में अगर हम कहें तो मानवाधिकार को मान्यता देने के लिए सबसे उपयुक्त रूप में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने घर की औरतें जो है उनको सही मान्यता के रूप में शिक्षा, सुस्वास्थ्य एवं सुसंपर्क, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड प्रदान नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं.
now we are going to celebrate in a very vast way, in a very duplicit way actually. It is actually duplicit, the recurrent status of our society. So, how it could be achieved? With a statutory body, especially in India, the NHRC is one and only statutory body to respect for women's rights, and that it is very important to know the National Human Rights Commission's constitutional parameters as well as the establishment of NHRC. NHRC, National Human Rights Commission in India, was established on 12th October 1993. The status with this Human Rights Commission that has been established with the Act, and that is called the Protection of Human Rights Act, PHRA, in 1993 as amended by the Protection of Human Rights Amended Act 2006. It is in conformity with the Paris Principle. So student, it is very important to know the Indian circumstances and how it is relevant with the international aspects. यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन से विषय हैं जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने रैटिफिकेशंस के तहत उसको अपनाया है एवं उसको मान्यता प्रदान करने के लिए उपयुक्त रूप में किस प्रकार से स्टैट्यूटरी बॉडीज हो या फिर कोई भी ऑटोनोमस बॉडी हो, वो किस प्रकार से उस नियम की पालन कर रहा है. With the international workshop on national institutions for the promotion and protection of human rights that was held in Paris October 1991. अक्टूबर 1991 को पेरिस में इस विषय को लेकर मानवाधिकार की रूप को संपूर्णता के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत करने की चेष्टा पर भारतवर्ष की स्थिति पर भी that was endorsed by General Assembly of United Nations with their regulations of 48/134 of 20th December 1993. The NHRC is an embodiment of India's concern for the promotion and protection of human rights. Section 2, subsection 1D of PHRA define human rights as the right relating to life, liberty, equality, and dignity of individual granted by the Constitution or embodied in the International Covenant and enforceable by force in India. तो इसी प्रकार से सेक्शन 2 के तहत उसके सबसेक्शन 1D में मानवाधिकार को संज्ञा के रूप में डिफिनेशंस प्रदान किया गया, जो कि NHRC की प्रधानतम फंक्शंस में से एक है. यानी कि मानवाधिकार क्या है? जीवन तथा अंतर्निहित रूप में सफलता के साथ सभी को एक समानता के रूप में सामने लाने की प्रचेष्टा पर आंतरजातिक एवं जातीय स्तरों में सभी के साथ एक समानता के स्वरूप में आगे बढ़ने की कोशिश पर भी इसको लगातार विशेष रूप से हम चेष्टा कर सकते हैं. And that is very important, and we can able to discuss with a very important aspect, and it is called the NHRC's functions and its input to the scenario of Indian circumstances. With this also, because India is vast and it has contemporary issues with a very challenging task. So, India is, with its state-based capacity, India is also having state human rights commissions. Different states in India have their own commission in human rights.
The Protection of Human Rights Act 1993 provides for the creation of state human rights commissions, and at the state level, a state human rights commission can inquire into violation of human rights related to subjects covered under the state list and concurrent list in the 7th schedule of Indian constitutions. भारत के रूप को भारत की मानवाधिकार के स्थिति पर और भी बेहतर तरीके से समझने की प्रयास में अगर हम इसको जारी रखें तो हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं किस प्रकार से सेंट्रल स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में मानवाधिकार को अलग अलग व्याख्यान के साथ अलग अलग वैशिष्ट्यकरण के साथ जुड़ा गया है और इसी के साथ जुड़ते हैं क्रिटिसिज्म, क्योंकि कोई भी विषय क्रिटिसिज्म बिना संपूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते. So criticism is very important whenever we are going to discuss the functions, the capability, the status of Indian human rights scenario and with the statutory bodies. So with this criticism, we can able to discuss that state human rights commissions has very, very limited powers and functions, are just advisory in nature. So they can provide only advices, recommendations दे सकते हैं और इन advices की कोई lawful enforcement नहीं है. यानी कि अगर कोई भी प्रतिष्ठान हो, कोई भी व्यक्ति हो जो मानवाधिकार की वायलेशंस कर रहे हैं, उनको सिर्फ recommendations या फिर advice दे सकते हैं. उसकी पालन करना यानी कि द एनफोर्समेंट, उसको बलपूर्वक उसके ऊपर पालन करने की कोशिश में जारी रखने की चेष्टा वो नहीं दे सकते. तो इसी प्रकार से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या फिर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, दे आर ओनली द एडवाइजरी बॉडी. दे कैन प्रोवाइड देयर वैल्यूएबल कमेंट्स, देयर वैल्यूएबल क्रिटिसिज्म्स. They are just putting their notes in the files. So ultimately, the solutions, if any kind of human rights violations could be happening, nothing could be possible with a very strong action-based orientations. कोई action जल्द से जल्द हम देख नहीं सकते, उसकी effectiveness आने में बहुत ही समय गुजर जाता है. जब भी कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की घटना घटती है, चाहे वो रेप हो, चाहे वो कोई भी कस्टोडियल डेथ हो, चाहे वो किसी के ऊपर भी कोई भी लांछना, डेप्रिवेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स या फिर मैनकाइंड हो, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर तुरंत जल्द से जल्द क्विकली एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है. नहीं तो वो विषय जिनके द्वारा वो घटना घट रही है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, तो वो बिछड़ जाते हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस, वो चैनलाइजेशंस वो टूट जाते हैं. तो उसके ऊपर फौरन अगर हम एक्शन नहीं ले पाए, अगर जस्टिस नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं मानवाधिकार की जो प्रोटेक्शंस की बात करते हैं, मानवाधिकार की जो प्रमोशंस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक लैक नजर आते हैं, कहीं ना कहीं वो छूट रहे. सो इट कैन नॉट इवन अवॉर्ड एनी रिलीफ, इंक्लूडिंग द मॉनिटरी रिलीफ टू द विक्टिम. तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस जो है वो और भी उनकी जो क्षमता है, जो फंक्शंस है, जो कैपेबिलिटीज है, वो बहुत ही कम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी. तो वो कुछ भी, इवन द मॉनिटरी रिलीफ भी वो विक्टिम को नहीं दे पाते. उनकी लिमिटेड, उनकी सीमाबद्ध रूप में अगर हम कैपेबिलिटी देखें तो इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं कि मॉनिटरी हेल्प भी वो नहीं कर पाते. Number 2 is the recommendations of state human rights commissions are not binding on the state government or authority, but it should be informed about the action taken on its recommendation within a month. एक महीने के अंदर
उनके द्वारा जो recommendations या फिर advices दिए गए हैं उनके ऊपर कोई भी रिपोर्ट देना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन मांग सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी अथॉरिटी से। पर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई जिसको हम कहते हैं विद अ वेरी बाइंडिंग एंड वेरी एक्टिव इनैक्टमेंट वो हम देख नहीं सकते। तो इन दिस वे इट इज अ वेरी critical issues whenever we are talking about the actual statutory body of human rights and the safeguard of human rights in such a way with a distinct formation of human rights safeguard formulations in the national scenario in India particularly. It is not so much strong as such. But there is also a but. It is a challenging task that whenever we are talking about the redressal system or redressal mechanism of human rights violation cases, in such a way, National Human Rights Commission is also working with the scavengers, the manual scavengers, जो हमारे गंदगी साफ करते हैं, उनके ऊपर, and the bondage levers. But of course, with the civil societies, with the NGOs, with the INGOs, the capability, the strong action can be achieved with a very quick time frame. Now we are talking about the role of judiciary and how it would work. विचारीकरण पद्धति में अगर हम देखें तो जुडिशरी में एक limitations हमें नजर आते हैं. With the Supreme Court, who is the main powerful body in Indian context, the Supreme Court of India is the highest authority of judiciary. But first of all, we need to understand the role of judiciary system. Courts in India are responsible for handling and passing the decisions on multiple issues. How a school should treat the students, or if two states can share each other's resources, etc. So that is been written in the judiciary mechanism or methods. But how it could work, that is not been written. So it could be interpreted in a different way. It is discussed that the role of judiciary can be divided into some basic points. And number one is dispute resolutions. अगर कोई द्वंद उत्पत्त होते हैं तो वो द्वंद उत्पत्ति के साथ साथ अगर कोई डिस्प्यूट हो रहे है कोई भी विषय को लेकर तो वहां पर किस प्रकार से हम समझौते के साथ हो या फिर वो विषय को किस प्रकार से सुलझाया जा सके उसी विषय को लेकर वो गहराईता के साथ समझ एवं सोच विचार को आगे बढ़ाते हुए इस विषय से लगातार हम आगे बढ़ते हैं with the dispute resolutions by the judiciary mechanism in India particularly. Whenever there is a dispute, the courts intervene in providing appropriate solutions out of this settlement, whether it's a dispute between citizens with the enactment of citizens' rights, citizens and the government, or between two state governments or even the central and state governments. The court is responsible for dispute resolutions with the appropriate mechanism and with appropriate methods. So व्यक्तिगत रूप में हो या फिर व्यक्ति के साथ सरकार की हो, दो स्टेट सरकार के हो सकते हैं, दो सरकार के बीच में हो सकते हैं, स्टेट एवं सेंट्रल के बीच में हो सकते हैं, कोई भी डिस्प्यूट हो कोई भी विषय को लेकर. For example, Karnataka and Tamil Nadu state government, they are arguing for the distributions of Kaveri water for a long time. So it is under the Supreme Court decisions and dispute resolutions can be taken up only by the Supreme Court. So it's a challenging task by the Supreme Court that whenever there is a very dispute situations, even within the person to person, even within the person to organization,
person to government, organization to government, government to government, Supreme Court have to intervene and give appropriate resolutions out of these. Second, that is also very important, that is judiciary review. Judiciary review, what is this? Judicial review is that the final hold of the Constitution of India and the interpretation of Constitution that is being taken care properly, appropriately, the interpretations can be taken up only by the Supreme Court and can be amended by the Supreme Court. So it is a judicial review that can take place by the Supreme Court. भारतवर्ष के अगर संविधान की बात करें तो भारतवर्ष के संविधान की रचयिताओं ने बहुत ही महत्वपूर्णता के साथ संविधान को बेहतर बनाने की कोशिश पर लगातार अभी भी उसकी अमेंडमेंट जारी हुई है और इस अमेंडमेंट को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही इसकी इंटरप्रिटेशन हो या फिर इसकी रिव्यू वर्क हो, वो हम देख सकते हैं इसकी कार्यकारी रूप को. This process is called judiciary review. The court can even override law passes by parliament. Parliament द्वारा लिखित amended laws को सुप्रीम कोर्ट अपने बलबूते पर उसको ओवरराइड कर सकते हैं, उसके ऊपर टिप्पणी या उसको बदलने की कोशिश पर अपना रिव्यू दे सकते हैं. Upholding the law and enforcing fundamental rights. That is also a very challenging task that has been taken care by the Supreme Court in India. Almost all fundamental rights of Indian citizens are denied in our, with a definition, proper definition that has been given in the Indian constitutions. In case any citizen feels that any such rights are violated, they can approach their local high courts or the Supreme Court directly for arguing their own basic rights. So any citizen in India, they can challenge anytime the constitutional laws that has been enforceable with the enactment by the Supreme Court, and Supreme Court have to intervene, have to give appropriate review and appropriate resolutions out of this. So with this, I would really like to have your questions, students, in this segment, because Indian Constitution is vast, Indian Constitution is huge, Indian Constitution is dynamic. But you need to understand that what is the main framework, that what is the main purpose of this redressal mechanism of human rights violation cases. Indian Constitution protects the citizens from any partial judgment. कोई भी व्यक्तिगत स्तर में हो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो, कोई भी व्यक्ति विशेषाधिकार के रूप में किसी भी विषय को लेकर प्रामाण्य स्वरूप में चैलेंज की सम्मुखीन रहते हुए कोई भी पार्शियल जजमेंट को प्राप्त ना कर पाए, उसे विषय को लेकर काफी चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं और इसे विषय को लेकर that gives the power of the judiciary to make decisions based on the rules of law in case of any dispute. Due to such authority, the judiciary of the country is an independent body. The courts, especially in India, are not controlled by the government and do not represent any political authority. Such independence allows the judiciary to ensure that there is no misuse of power by any section of the government. क्योंकि government के जो sections हैं वो अलग-अलग बटे हुए हैं. Especially the law-based enactment that is being passed by the parliament should be interpreted by the judiciary. So इनके जो कार्यकारी रूप है वो अलग-अलग स्तर में रूल ऑफ लॉ के तहत बटे हुए हैं. इनकी कार्यकारी भूमिका हो या फिर फंक्शंस हो, कैपेबिलिटीज हो, वो अलग रखे गए हैं
और इसी के साथ with the independence of judiciary calls separations of powers. This basically means that both the legislatures and the executive branches of the government cannot interfere with the functions and decisions of the judiciaries. यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो कि शासन करता है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, एमपीज, एमएलएज या फिर पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो कभी भी जुडिशियरी की जो फंक्शंस है उसके ऊपर प्रभाव विस्तार ना कर पाए। विचार व्यवस्था को संपूर्णता के साथ अलग रखा गया है, जिस विषय को लेकर बहुत ही महत्वपूर्णता के साथ भारतवर्ष की संविधानकर्ताओं ने अपना सोच विचार के साथ इसको सेपरेशन ऑफ पावर के तहत अलग रखा है। The judges of both High Courts and Supreme Court must be appointed without any influence or interference from other branches of the government. Also, it is very difficult to remove a judge from his or her office once appointed by the judiciary. So, इसको संपूर्णता के साथ अलग इसलिए रखा गया है कि विचार व्यवस्था को सरकार की दो अलग हिस्से के साथ, यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड लेजिस्लेटिव बॉडी, ये दोनों से बिल्कुल अलग रखा गया है। इसकी कार्यकारी रूप को, इसकी क्षमता को अपने अंदर सीमाबद्ध रखने की कोशिश पर। What is the structure of courts in India? District courts, high courts, Supreme Court. So basically three types, three tiers. District courts. This is where most citizens go to for any dispute in their city or region. ये छोटे कोर्ट है जहां पर डायरेक्टली कोई भी इंसान, कोई वो व्यक्ति अपनी जगह में कोई भी अगर डिस्प्यूट, कोई भी अगर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं तो वहां पर प्रत्यक्ष रूप में वहां पर जा सकते हैं और अपना जो समस्या है वो सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। Each state comprises many districts and has its own district or subordinate courts, and the entire district is presided over by the district judge. High courts. Each state has its own high court, which is mostly, with a certainty, the highest judiciary authority of the state. Now, the Supreme Court. This is the top of all state and district courts, presided by the Chief Justice of India, because it is the highest authority of justice for the country, for the entire country. पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट सबसे प्रामाण्य स्वरूप में सबसे सर्वोच्च न्यायालय है। Of course, it is the Supreme Court of India is located in Mandi House, New Delhi. Now we are going to discuss about another topic, and that is media advocacy. Today's life, we are sensation with the media news and social media as well. So, media advocacy. What is media advocacy? मीडिया की शिक्षाकरण क्या है? मीडिया की साक्षरता क्या है? एडवोकेसी। तो मीडिया एडवोकेसी is a new strategy that is emerging, that is outcoming and overcoming days with a public health community. यानी कि संपूर्णता के साथ सोसाइटी की, कम्युनिटी की हेल्थ कैसी है वो समझने के लिए हमें मीडिया की जरूरत लगातार पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ेंगे भी। और समस्या की बात ये है कि मीडिया में आजकल फेक न्यूज़ की चलते मीडिया एडवोकेसी की जो प्रामाण्य स्वरूप है, जो उपलब्धता है, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। Media advocacy is defined as a strategic use of mass media to the advance public policy initiatives. Media advocacy is rooted in the community advocacy. अपने कम्युनिटी में किस प्रकार से आप सचेतन या फिर अवेयरनेस या प्रमोशंस करेंगे कोई भी विषय को लेकर, वो चाहे जेंडर सेंसिटाइजेशन हो, वो चाहे लिटरेसी हो, वो चाहे गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन हो, कुछ भी विषय को लेकर आप किस प्रकार से अपने कम्युनिटी में एक वेव,
एक बदलाव, एक सोच, एक छोटी सी सोच के साथ आप पूरे कम्युनिटी को बदल सकते हैं। उसी सोच को एडवोकेसी कहते हैं। और उसको किस प्रकार से आप प्रमोट करेंगे, किस प्रकार से सामने लाएंगे, उस विषय को अवेयरनेस के साथ प्रस्तुत करना, यानी कि आपकी प्रेजेंटेशंस कैसी होंगी, उसी को मीडिया एडवोकेसी कह सकते हैं हम। विद अ नॉलेज गैप, while traditional media approaches try to fill the knowledge gap, media advocacy addresses the power gap. With the improvement in health status are believed to come about primarily preliminary with the gaining for more power over the policy environment rather than simply gaining from knowledge about health behaviors. So it is that as a part of advocacy campaign, it is important to use media, that key decision making with a pay attentions in order to influence them to support your issues. And this means framing their issues with a way that make it more relevant, more concrete, more understandable. आप किस प्रकार से इस विषय को और भी गहराईता के साथ सोच विचार एवं संपूर्णता के साथ आत्मस्थ करते हुए उसको समझ विचार के साथ अपने आप को सुधार रहे हैं, तथा अपने आप की सुधारीकरण के साथ साथ आप अपनी कम्युनिटी की भी सुधारकरण कर रहे हैं, वो भी मीडिया एडवोकेसी की पार्ट है और कैंपेन की पार्ट है। विद द की मेकिंग पॉइंट ऑफ द डिसीजन मेकर्स, सम एडवोकेट्स worry about their campaign budget has no room for media advocacy, but good letters to the editor and op-eds editorial requires minimal resources and can have big influence on key decisions makings. आप media advocacy कैसे कर सकते हैं? आपके community में, आपकी रीजन में, आपकी छोटी सी लोकलाइट्स में कोई भी समस्या हो, उस चीज को लेकर अपनी भाषा में अगर हम कुछ भी 1 पेज 2 पेज में लिखें और कोई भी लोकल पेपर में वो एडिटोरियल कॉलम में अगर आप उसको भेजें, तो वो भी आपकी मीडिया एडवोकेसी हो सकते हैं। शुरुआत आपसे होनी चाहिए। आप किस प्रकार से अपने सोच विचार को चैनलाइज करते हुए कौन से विषय को लेकर आप उसकी प्रमोशंस करना चाहते हैं, इसको भी हम मीडिया एडवोकेसी की कैंपेन की एक गुरुत्व मानते हुए, क्योंकि इसमें कोई रिसोर्सेस नहीं लग रहे हैं, कोई भी पैसा नहीं जा रहा है, आपकी एनर्जी जा रही है थोड़ी सी, और वो एनर्जी किस लिए जा रही है? आपकी खुद की अच्छाई के लिए, आपकी कम्युनिटी की भलाई के लिए। सो इट इज योर टर्न स्टूडेंट्स, टेक अप योर challenges, how you write, how you narrate your problems, your community problem, your nation's problems. While social media tools are gaining the momentum in advocacy work, social media आज किस प्रकार से काम कर रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह से पहले के जमाने में भी एडिटोरियल्स लिखते थे हम, पहले के जमाने में सोशल मीडिया नहीं थे, पर आज के जमाने में सोशल मीडिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी टूल है। इट इज एडवांस टूल, बट हाउ वी कैन यूज इट, हम किस प्रकार से उसको यूज कर रहे हैं वो हमारे ऊपर है। It is important to be strategic around their uses. A social media represents in its a time consuming with a manage all over decision makers. Role of NGOs, human rights literacy and awareness program. किस प्रकार से NGOs लिटरेसी प्रोग्राम में हमारी सहायता करते हैं? No study of human rights in independent India can be completed without specific mention of the role of non-governmental organizations or NGOs in exposing the instances of human rights violations for suitable actions by the government. सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में मजबूती के साथ विद एक्शन ओरिएंटेशंस एंड एक्शन पैक्ट एनजीओस ही सबसे पहले झंडा उठाते हुए जब भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस घटते हैं या फिर ह्यूमन राइट्स की बातें होती है, तो एनजीओस के बिना कुछ भी संभवपर नहीं है। और एनजीओस के साथ ह्यूमन राइट्स ये नाम इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि एक दूसरे से अलग करना नामुमकिन है। With since the end of Second World War, the most especially since the end of 1970s,
there has been an explosive emergence of local, national, and international voluntary organizations working for the protection, promotion of human rights ऑन एवरी कॉन्टिनेंट सभी देशों पर द्वितीय विश्व युद्ध के एक डिवास्टेटिंग एक्ट के बाद इंटरनेशनल एनजीओस हो, नेशनल एनजीओस हो, लोकल लेवल एनजीओस हो, वो काफी हद तक अपने एरेना पर काम करते हुए नजर आ रहे थे और इसी विषय में द फंक्शंस ऑफ एनजीओस इन ह्यूमन राइट्स अरेना कैन बी डिस्कस्ड विद अ वेरियस इफेक्टिव वे दैट इज नंबर वन इज द इंफॉर्मेशन गैदरिंग इवैल्यूएशंस एंड डिसमिनेशंस किस प्रकार से वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते और उसकी जो रिपोर्ट्स बनाते हुए सरकार या फिर इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स को पेश करते हुए उस विषय को लेकर किस प्रकार से विद अ पैराडॉक्स दैट सेंट्रल ऑफ ह्यूमन राइट्स इज स्टिल नाउ स्ट्रगलिंग फॉर देयर ओन कैपेसिटी बिल्डिंग advocacy to stop abuse and secure for redress. So redressal mechanism में NGOs की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में योगदान है एवं उसकी कार्यकारी रूप में advocacy means actively taken up the cases whose rights are being violated. So इस advocacy program में NGOs बहुत ही महत्वपूर्णता के साथ हाथ बटाते हुए नजर आते हैं. Number 3 is legal aid, scientific expertise and humanitarian assistance. मानवता के स्वरूप में लीगल एड प्रोवाइड करना या फिर कोई भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो, अपने वॉर क्राइम हो या फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जहाँ पर भी हो रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस विद सेंडिंग फूड्स, क्लोथ्स, सामान्य रूप में रीडिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करना, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को देखभाल करना, एक्सटेंडिंग मटेरियल्स टू एड to the support system as a family pensioners providing with the pregnancy relief, refugees, internally displaced persons को help करना, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सहायक स्वरूप बनी हुई है एनजीओस की कार्यकारी रूप में. So here I'm going to stop myself because I really don't want to talk much about it. Rather, I really want to have your comments, your suggestions, your questions. So students, it's my heartiest request to you. Ask any questions and ask yourself first. And of course, I'm ready to help you. Thank you so much for watching this video, and I hope you would love to enjoy it throughout this journey. You came to know about some points, some information, the redressal mechanism of human rights violation cases and how it could be solved with your interventions, with your help, with your challenges. Thank you so much.